Good morning, everyone. Okay, so before we start with today's lecture, internal specific कोई doubts है तो पूछो. So first we'll solve those doubts, then we'll continue with our syllabus. And one more thing, हम लोगों का सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ वो नोट्स में से डिस्कस किया था सिलेबस पर्सपेक्टिव. बट नाउ वी हैव इनफ टाइम. तो एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें कैसे होता है वो अलग अलग हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे. सो अभी जो कुछ टॉपिक है हम लोग के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के. सो मैनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग फील्ड, तो वही हम लोग देखेंगे. मैं आपको बेसिक जो बेस्ट इंडस्ट्री में चलने वाले जो चीज़ें है उसके में कहीं ना कहीं आपको कुछ एग्जांपल्स कुछ वीडियोस हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस लेक्चर्स. ओके, सो दिस वीक वी हैव इंटरनल एग्जाम्स. आई थिंक 10 से स्टार्ट हो रहा है आपके यहाँ. बताओ जल्दी से, कोई डाउट है किसी को? जल्दी बोलो. एनीवन, एनी डाउट्स? So there's no doubt, but I have some small query. हाँ Not exactly a query as well. Sir, I just wanted to know for the internals what we did for the theory as a theory point of view. That would be enough, or the examples which you gave, you'll be considering that as well for the questions. of course, the example which we have discussed, like it's not going to be a test where I'll be putting some lines as it is from the note. So it's purely based on your understanding. You will be solving those MCQs. Okay, sir. Yeah, so basic understanding of first two units is very much required to solve those MCQs, because अगर आपको basic understanding नहीं है then it's quite difficult for you to solve it. Like if I say कि if I put or frame some MCQ for quality, तो मैं वहाँ पे as it is quality का जो definition दिया है, I'll be not putting that definition and ask you कि okay which this definition belongs to software quality testing etc etc. तो बेसिक आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक के. तो कंसेप्ट्स क्लियर अगर होंगे तो एमसीक्यू सॉल्व होंगे, अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो एमसीक्यू सॉल्व होने में थोड़ा डिफिकल्टी तो आएगा ही. Okay, sir. या So हाँ. same for ITSM as well, right? या बहुत बहुत मैंने जो पढ़ा है उसके लिए सेम कंसेप्ट होंगे, बिकॉज इन आई टी एस एम यू हैव सिलेबस लाइक यूनिट 1 एंड यूनिट 3. फर्स्ट टू Yes, sir. यूनिट नहीं है. सो या तो फर्स्ट यूनिट में से जो भी टॉपिक एमसीक्यूज आएंगे वो वैसे ही रहेंगे. एंड थर्ड में से आएंगे दैट बेसिकली यू कैन आस्क कल्याणी मैम फॉर दैट, बिकॉज वो अभी मुझे आइडिया नहीं है. Okay, sir. ठीक है. या ओके, एनी अदर पर्सन, एनी अदर डाउट्स? ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग कि कुछ टॉपिक्स जो है आपके वो एस क्यू ए में फ्यू टॉपिक्स आर ऑल्सो लिंक्ड विथ आई टी एस एम. तो हम लोग आई टी एस एम का फर्स्ट टू यूनिट्स ही कर रहे हैं. तो वंस वी आर डन विथ फर्स्ट टू यूनिट्स, मैं कहीं ना कहीं आपको जो यूनिट 3 और 4 में के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो यूनिट 5 जो मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए काम में आएंगे, तो वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा. सो दैट हम लोगों का आई टी एस एम में कुछ भी पॉइंट्स जो मैं आपको डायरेक्ट यूनिट 5 में पढ़ाऊँ वो मिस ना हो. ठीक है, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा यूनिट 3 एंड 4, जिससे यूनिट 5 में मैं आपको कुछ डायरेक्टली अगर पढ़ाऊंगा, आपको कल्याणी मैम ने पढ़ाई है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जो आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, अब इंटरनल स्पेसिफिक और किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट्स? ठीक है. सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ, आई मीन नॉट स्टार्टिंग, लेकिन हम लोग जो टेस्टिंग वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर आई बी विल जस्ट हैव अ लुक एट वन वीडियो जहाँ पे हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, और आपको एज अ प्रोफेशन अगर यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, और हम लोग के थियरी में जो पॉइंट्स दिए वो कैसे काम में आएगा. नाउ रिमेंबर, इससे आपके ITSM के भी कुछ पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे. ओके, वो वाला मैं कुछ बता रहा हूँ. सो ध्यान से देखना. आफ्टर दिस विल अगेन कंटिन्यू डिस्कशन. हैव अ लुक एट दिस.
lives. So testing software becomes more valuable and important as we welcome new applications and devices into our homes and businesses to take command of important tasks. Hey guys, I'm Archana from Edureka, and I welcome you all to this session on automation testing. Okay, I hope sound clear आ रहा है ना सबको वीडियो में? Sound clear है? Hello? हाँ sir, clear है. Okay. But before we proceed, let's go ahead and take a look at topics that we will be talking about today. We will start the session by discussing what is software testing and why is it important. Then we will cover the basics of automated software testing, like what it is, why it's necessary for the IT industry, and how to make sense of the technology behind it. We will also check out the differences between manual testing and automation testing. Finally, we will end this session by discussing popular automation testing tools. So I hope agenda was clear to you guys. Let's get started then. On April 26, 1994, aircraft named Airbus A300 was completing a routine flight and approach when just before landing at airport, it crashed. The crash killed about 264 people. And to date, the accident remains the deadliest accident in the history of China Airlines. Similarly, on August 14, 2003, shortly after 2 p.m., a high voltage power line in northern Ohio brushed against some overgrown trees and shut down completely. 50 billion people lost power for up to 2 days in the biggest blackout in North American history that day. Normally, the problem would have tripped an alarm in the control room, but due to software glitches, the alarm system failed. In April of 1999, there was failure of a $12 billion military satellite launch. It was due to some sort of technical issue in satellite's guidance system. Similarly, in 1985, Canada's Terra 25 radiation therapy machine malfunctioned due to some software bug and delivered lethal radiation to patients, leaving 3 people dead and critically injuring 3 others. So now you might be wondering, why am I discussing all this here, right? Well, all the incidents that I mentioned just now happened because of the software bugs. Software used here was not tested before implementing. Every system has software bugs. It's impossible to design and bring out a perfect software product. Fundamentally, the world itself is imprecise and unpredictable, and all the software systems connect to the real world in one or the other way. So software testing is very important. Software testing basically is the process of executing the software or an application to find out if there are any kind of bugs or some sort of errors in it. As the name already suggests, the software testing means checking the developed software for any mistakes and problems in the initial design of software. So the incidents that we discussed earlier are just few. There are many other fatal incidents that occur due to lack of software testing. So software testing gives confidence in the quality of final product. It confirms that the application has no errors in the code. It verifies how the user can work with the application and ensures that the end product is very easy to use. It also tests for the bugs in the software in the initial stages of development and until the software is ready. It confirms that the application is able to operate in all the required conditions and on all supported operating systems or web browsers correctly and safely. So before actually software goes public, programmers spend hours trying to iron out every little bug there is in software. And that is what we call software testing. Testing is broadly classified as manual testing and automated testing. So manual testing, it's pretty self-explanatory, right? Testing of a web application is done manually by human action. That's what we call manual testing. This means that someone actually goes on a device to evaluate numerous components, including design, functionality, and performance of software. So they click through multiple elements or units of web application without any support from tool or script. Thorough testing is crucial to the success of a software product. If your software doesn't work properly, chances are strong that most people won't buy it or even use it, at least not for long, even if they buy it.
But testing to find defects or some sort of bugs is very time consuming, expensive, often repetitive, and subjective to human error if you are using manual testing. So this is where automation testing comes into picture. Automation testing, well, it's automated. The buzzword automation focuses on replacing manual human activity with systems or devices that enhance efficiency of software. Test automation, or usually referred as automation testing, uses different kind of tools, scripts, and software to perform test cases by repeating predefined actions. So by automating your software testing activities, you will definitely get a competitive edge in the market. So let me give you some examples. Amazon is testing delivery drones that pick up warehouse orders sorted by robots. Google is testing self-driving cars. Starbucks is testing cashier-free stores dedicated to mobile ordering and payment. Facebook is testing a brain-computer interface that may one day translate thoughts into digital text. Fascinating, right? There are mundane versions of automation technology behind all this testing. Software automation testing. Companies use automation technology to create the software responsible for the products and services causing all this hype about automation testing. When you actually begin testing, one of the primary decisions that you'll have to make is if to choose manual testing or automated testing. While neither of these options are technically better or worse when compared to each other, factors like size, budget, time allowance of the project will certainly be factors that affect which method will work best in the situation. So you should be aware of distinct differences between manual testing and automated testing. So here we go. The first difference, obviously the definition, which we discussed earlier. In manual testing, test cases are executed by human tester and software, whereas automation testing uses different kind of automation tools and scripts to execute test cases. So let's get started with other factors. The first is reliability. For a testing phase where duration is very long, there are high chances of an undetected error when testing is performed manually. Every time a small defect is fixed, the entire application needs to be tested to ensure that any other breakage is not occurring. Well, the process is tiring and boring, so testers often miss out critical defects while performing repeated testing. It's a common human behavior, right? Therefore, the accuracy and reliability of manual testing is very low. Automated testing, on the other hand, is more reliable. Tools or the scripts that you use form the automated test. If the script is properly written, there is no chance of missing a defect when the test is executed over and over again. And obviously, it's not boring as well for the machine, right? When it comes to reliability, automated testing is highly reliable. Then comes the time required to perform the testing. Manual testing is obviously time consuming. It takes up human resources. But when it comes to automated testing, it's executed by software tools and different kind of scripts. So it is significantly faster when compared to manual testing. Next, we have when to use which kind of testing. Manual testing is suitable when the test cases are run once or twice. Therefore, there's no frequent repetition of test cases in manual testing. So to name, manual testing is suitable for exploratory or usability and ad hoc testing. Automated testing is suitable when the test cases need to be run repeatedly for a long duration of time. Automation testing is suited for regression testing, performance testing, load testing, or highly repeatable functional test cases. And next we have performance and batch testing, which is not possible in manual testing. You can batch multiple test scripts in automated testing. Performance tests like load testing, stress testing, spike testing, etc. have to be tested by an automation tool compulsorily in software testing process. Then we have investment costs. The cost of manual testing is usually dependent upon the human resources deployed in the testing during the initial stages of testing. The initial investment in manual testing is comparatively lower, but the return of investment is very low when compared to automation testing. When I say return of investment, I mean the money that you earn as a revenue at the end of the software testing or after selling the product is actually low when compared to automation testing, in long run that is. But the cost of automated testing is dependent upon testing tools deployed for performing the tests. But the initial investment in automation testing is usually higher, though the return of investment is better in long run. So when it comes to investment cost, initial investment, manual testing is much preferable. But if you want to perform testing for longer run, then automation testing is much preferable.
As the last criteria, we have human element. Manual testing allows human observation, right? So you're getting exact kind of feedback a person would give you, and that can be invaluable. Being able to predict what your users will or won't like, things that a computer can't give feedback on ahead of time, can influence your design and make it much better from the bottom up. It improves the customer's experience. But when it comes to automated testing, as there is no human observation involved, there is no guarantee of positive customer experience. So when it comes to human element, manual testing is much better because you get to have a nice experience since the humans are the ones who are checking the software. So guys, these are some differences that you should be aware of between manual testing and automation testing. So to summarize what we've learned till now, automation testing has a lot of advantages over manual testing. First of all, it saves a lot of time and money. It improves test accuracy. It increases the test coverage, as in you can perform tests repetitively on different kind of devices. Complex tests and boring tasks are made very easy and comfortable. It increases efficiency and team morale. You no longer have to do the boring and repetitive tasks. There'll be no human errors, obviously. It reduces maintenance cost of testing. It increases speed of executing tests and many more advantages. So in short, while manual testing is effective in projects with multiple operating environments and hardware configurations, automation testing is absolutely essential today to successfully deliver large-scale products that need execution of repetitive and complex test cases. But it's impossible to automate all testing. So it is important to determine what test cases should be automated first. So guys, let's go ahead and take a look at use cases where automation testing have to be applied. Because like I said, you can't apply automation everywhere. First of all, as you guys know, repetitive tasks are primary candidates for automation. Take an e-commerce site for an example. It may be testing, entering in user credentials multiple times. Consider the tasks that you hate doing. Not only are these tasks boring to you, but they're often the ones where mistakes are made very commonly. So automate them and do something more fun. Next, capturing and sharing results is obviously a critical part of a successful test strategy. Rather than manually exporting your data, crunching the numbers, and making petty graphs, invest in a tool or automation strategy that will do this for you. Thereby, you can save time and a lot of effort on your part. And obviously, tests that require multiple data sets. Rather than manually typing in information into forms or fields, automate this process to read in information from a data source and automatically type into the respective forms. This way, you will have better handle on your data variability, and it also decreases the chances of making mistakes repetitively again. And suppose if you're waiting for an on-screen response, it can be automated. So you do not have to waste time staring at a screen and watching for a response, right? You have other better things to do. Put that time to better use and use automated controls like wait until in your program code. Then you have non-functional testing. A good example of automating non-functional testing types is automating load testing. Think about having to see if your application can handle a load of 10,000 users. Automate this testing so you do not have to worry about manually spinning up 10,000 users hitting your application all at once. Tests that run on several different hardware or software platforms and configurations. So as the number of device users interact with increases, automating your setup or tearing down your setup environment will continue to be critical. Additionally, these are scripts that you will use over and over again in multiple testing frameworks, right? It's better to automate than to do them manually. So basically, the cases where you have to automate is when you have repetitive and boring tasks, or if you have to capture some results and share the results, or if you have to repetitively enter the data task, as in data entry task, or some sort of timing or screening responsiveness, and especially in load testing. And suppose if you want to set up or tear down your environment setup, then you can use automation. So guys, it's always better to know when to use or when to apply automation in software testing. So guys, success in test automation process requires careful planning and design work. Start out by creating an automative plan. This allows you to identify the initial set of tests which to automate and serve as a guide for future tests as well. There are a lot of helpful tools to write automation scripts. Before using those tools, it's better to identify the process which can be used to automate the testing or the procedure that you have to follow to start automation. So as next part of the session, we'll discuss the steps that you need to follow when you're performing automation testing. So like I said earlier, success in test automation requires careful planning and design work. So start out by creating an automation plan.
First of all, you should define your goal for automated testing and determine which type of test to automate. Once you're sure of what kind of test are you performing, you need to select the tool. So the first step here is test tool selection. There are several kinds of testing tools available. However, choosing the right tool, keeping in mind the nature of test involved, is very important for your automation to be successful. So whether it's a code-driven testing process or graphical user interface-based testing, you must select the appropriate tool to automate the testing. So the first step is selecting the proper tool required for automation of your application or testing. Next comes defining scope of automation, as in you need to select which test cases to automate. Here you can follow certain pointers like the features that are important for business, scenarios which have large amount of data, or those which has common functionalities across different platforms and applications, technical feasibility, the extent to which business components are reused, the complexity of test cases, etc. So by keeping these pointers in mind, you can define the scope of automation. And the third step is planning, design, and development. After determining your goal and which type of test to automate, you should decide what actions your automated test will perform. Planning, design, and development. Develop test cases. Don't just create test steps that test various aspects of application's behavior at one time. It becomes overwhelming. Large, complex automated tests are difficult to edit and debug as well. So it'll be a problem for you later on. So it is best to divide your test into several logical smaller tests. So once you've developed your test cases or you have written your test scripts, next step is to develop test suites. Test suites are developed to ensure that the automated tests which you have written run one after the other without any manual intervention. This is done by creating a test suite that has multiple test cases, a library, and a command line tool that runs the best suite. So guys, the next step is test execution. Once you're done with writing your scripts and placing them in suitable test suites, the next step is to start executing them. Automation scripts are executed during this test execution phase. So execution can be performed using automation tool directly or through the test management tool, which will invoke the automation tool which you have chosen. To get the most out of your automated testing, testing should be started as early as possible and as often as needed as well. The earlier testers get involved in the life cycle of the project, the better. And more you test, the more bugs you can find, right? So yeah, your scripts are executed in this phase. Once executed, the next step obviously is to create report formats so that individual test logs with details of action performed during test are recorded properly for references. So you define the type of test report format to be created, screenshots, messages, etc. So all such things you include in your report. As new functionalities are added to system under test with successive cycles, automation scripts need to be added, reviewed, and maintained for each release cycle, right? So maintenance becomes necessary to improve the effectiveness of automation scripts. So what I mean here is that you do not entirely finish a product and start testing. Suppose if you have found some bug, you add additional features and again start your testing from the beginning. So maintenance plays a very important role and it becomes necessary step to improve the effectiveness of your automation scripts. So you need to follow these steps when performing automation testing to get the best results and efficient results. Next comes the automation tools. There are several innovative automation testing tools, but before we discuss that, we need to understand there are different kind of approaches to automation. The first one is we have code-driven approach. This approach uses testing frameworks like XUnit framework, etc. The focus here is mainly on test case execution to find out if various sections of code are performing as per our expectations under different conditions or not. So code-driven testing approach is a popular method used in agile software development. Then we have graphical user interface. Applications that have GUIs or graphical user interface may be tested using this approach. It allows the testers to record user actions and analyze them any number of times. So this is one way of going at automation. For example, if you want to test a website, you can use automated testing tools like Selenium that provides a record and playback tool for authoring tests without any knowledge on test scripting language. So you do not basically have to know the scripting language here. You do have record and playback tool using which you can start executing your test. Test cases can be written in any number of programming languages like C#, you have Java, Perl, Python, Ruby, and many other options. So the next approach is using automation framework.
So basically, a test automation framework is a set of guidelines which are used to produce beneficial results of automation testing activity. This framework brings together function libraries, test data sources, object details, and other reusable modules. It lays down the general rules of automation and it simplifies the effort required to bring the efficient results and lower your maintenance cost as well. So basically, you can say you're setting down a set of rules that you need to follow while performing your automation testing. Let's consider an example. Suppose if there is any change in a test case, then only that particular test case file needs to be updated without having to make any change to the driver or the startup script. So now you have multiple approaches when it comes to frameworks. Frameworks could be linear scripting framework, recording and replaying test scripts in sequential or you can say a linear fashion. You have data-driven framework. A constant source of test criteria specifies the test scripts which you have to run here. Then you have keyword-driven framework. Here, the tables on a spreadsheet actually specify the action of a test scripts that need to be performed based on the library of functions for an assigned keyword. Then you have modular testing framework. Modules of an application under test are divided and then tested with individual test scripts, and then they can be combined for larger test scripts. Then you have hybrid testing framework. Obviously, it's a combination of frameworks to leverage the strengths of each of the ones which we discussed earlier. When you've decided to perform automation testing, you can opt for any of these approaches. You can go for code-driven testing. You can also go for graphical user interface if you're testing graphical user interface. Then you can go for a framework approach, and you have multiple framework options here as well, like linear, which performs testing in a linear fashion. Then you have data-driven, keyword-driven, modular testing, and hybrid testing, which is a combination of all the other framework types. So yeah, guys, basically there are ways you can implement automation while software testing. So now moving on to test automation tools. Selecting an automated testing tool is essential for test automation. Well, there are a lot of automated testing tools in market, and it is important to choose the automated testing tool that best suits your requirement. So basically, when you're trying to test or select an automation tool, please do follow the key points which I'll mention now. First of all, check if the tool is compatible with platforms and the different kind of technology that you're using. Ask yourself, do you need support for mobile automation testing or different other kinds of testing? Are you testing .NET, C#, or other applications? If yes, and then on what operating systems? So next, flexibility of the testers also plays a very important role. That is, what kind of skills your tester have also plays a very important role. For example, can your QA department write automated test scripts, or is there a need for keyword testing? Thirdly, does the automated testing tool support record and playback test creation as well as manual creation of automated tests? So basically, you need to consider these sort of questions or situations before you go ahead and select a tool. You can also look if the tool includes features for implementing checkpoints to verify values, databases, or key functionality of your application. You need to create automated tests that are reusable, maintainable, resistant to changes in the application UI, right? So ask yourself, will my automated test break if my UI changes? So based on that, choose a tool. Make sure that the application is stable enough. To automate the early development cycle, unless or otherwise it is an agile environment, it not be a good idea. And finally, the cost and the effort that you need to put in is also a very valuable concept that you should consider when you're choosing an automation tool for your testing. Well, these are certain categories or scenarios or key points that you should take care of when you're actually choosing an automation tool. Now to name few popular automation testing tools, we have Selenium. Selenium is a popular testing framework to perform web application testing across multiple browsers and platforms like Windows, Mac, Linux. Then we have Water. WATIR, basically, it's pronounced as Water, is an open source testing tool made up of Ruby libraries to automate web application testing. Then you have something called Ranorex. It is a flexible all-in-one GUI testing tool. So using Ranorex, you can execute automated tests flawlessly throughout all environments and browsers and devices. Then you have APM, it's a mobile testing tool. It is an open source mobile test automation software. Obviously, it's free and supported by a high active community of developers and experts. So apart from this, you also have Zypher, Tosca for end-to-end testing, then HPE or Unified Functional Testing, which was formerly known as HP Quick Test Professional or QTP. And I can just keep going. There are plenty of automation testing tools. So tool selection is one of the biggest challenges that need to be tackled before you actually start with your automation. So first, identify the requirements.
Explore various tools, get to know them and their capabilities, set the expectations from the tool, and go for a proof of concept. So that's how you choose a tool of your choice. So guys, in some situations, automation testing is very important, but as much it is comfortable, that much it is risky too. So if you decide to do automation testing, then think of following scenarios first. Starting cost for an automation is very high. Automation tool purchasing cost, training and maintenance of test script, all these costs are very high. Because of this reason, some companies are worried to take decision to automate their work. Secondly, automation is not 100%. Automation testing cannot be 100% and don't think of that. There are areas like user interface, documentation, installation, compatibility, and recovery where testing should be done manually. You can't do all this using tools. You need to have a person involved in this. And another risk that you might encounter is when you have unrealistic expectations from the automation testing tool. So like I said earlier, know the requirement, study different kind of tools, get to know their capabilities and choose the tool. And then comes the incompatibility of automation testing tools with the test environment and other software testing tools in test environment. Then you have vendor issues like inability to provide technical support, inability to update the automation testing tools with changes in software testing platform and all that. And one more point, do not automate unfixed user interface. Be careful before automating user interface. If user interface is changing always, cost associated with script maintenance will be very high. So basic user interface automation is enough in such cases. By mentioning all these points, what I wanted to tell you is automation is not possible every time. And these are some cases where you might have to start looking twice before you actually implement automation here. So guys, there's no silver bullet for testing during the development process. Despite the wide variety of techniques and tools, we cannot rely on a single approach. Automated and manual testing each have their strengths and weaknesses. What we want to stress here is that no matter how great automated tests are, you cannot automate everything. Manual tests play an important role in software development as well, and they come handy when you cannot automate the process. So guys, we have reached the end of the session. And by now, I'm sure you know what automation testing is and benefits of using automation testing, when to use it, and which test cases need to be automated, and how different it is from manual testing. So make sure to consider all these points when you go ahead with automation next time. So guys, we have reached. Okay, so that's something basic about automation testing. तो जो हम लोगों ने थोड़ा कुछ डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट्स अगर मैंने मिस किए रहेंगे तो वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके साथ में सर्टेन दूसरे पॉइंट्स जो है वो हम लोगों को डिस्कस करना है। नाउ हम लोग यूनिट 5 के लास्ट चैप्टर पे ही है, तो वहाँ पे टेस्टिंग रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन वो जो पॉइंट्स है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो ऑटोमेशन टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज और कुछ मॉड्यूल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये जो कुछ पॉइंट्स है वो हम लोगों ने सारे वो नोट्स में जो दिए है वो बेसिस पे हम लोग डिस्कस करके एज इट इज़ हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये टेस्टिंग अगर हम लोग थोड़ा प्रॉपर अगर फॉलो करेंगे देन वी कैन ईजिली गेट अ जॉब हियर इफ़ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट और समथिंग एल्स। So that's why मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, and we have enough time for now, क्योंकि एग्जाम्स आर इन अप्रैल एंड वी आर इन मार्च, तो वी हैव इनफ टाइम जहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें धीरे धीरे थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। वी हैव टाइम फॉर रिविजन इज वेल। तो इन केस इफ़ यू वांट कि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर रिवाइज भी करना है देन लेट मी नो, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, and out of all the students, tell me if you have any doubts with respect to first 2 units, वो topic हम लोग easily we can quickly revise it. I hope हम लोगों को याद है यूनिट 1 and 2 में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे, ठीक है। सो इन यूनिट 1 एंड यूनिट 2 वी हैव फ्यू टॉपिक्स, और वही सेम अगर आप देखेंगे यूनिट 5 में वापस रिपीट हो रहा है। सो डिटेलिंग ऑफ टेस्टिंग, if you just have a look here, this is unit 2. So again in unit 2 we have this points like introduction to quality, जिसमें अगर आप देखेंगे
this one. So in unit 2 again we have this point, that is fundamental of testing. What is testing? जो अभी हम लोगों ने देख लिया, necessity of testing, टेस्टिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होगा, ये देखो अभी ये जो भी कुछ पॉइंट्स अभी हम लोगों ने वीडियो में देखे ना, वही कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो दैट मीन्स वी कैन ईजिली जस्ट हैव ए लुक एट दिस एंड आप देख सकते हो कि हम लोग क्या पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. बिकॉज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिसिस में टेस्टिंग रिलेटेड आप जितना डिटेल में समझ पाओ उतना इंटरव्यू में वी कैन इजीली आंसर द क्वेश्चंस. डेफिनेशन ऑफ टेस्टिंग, दैट्स अगेन अप्रोच टू टेस्टिंग. कौन सा अप्रोचेस विल बी फॉलोइंग, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, बराबर है. यूनिट टेस्ट के अंदर जो सब पार्ट्स हम लोगों ने देखे थे, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये हम लोगों के टॉपिक पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक कर रहे हैं. इंटीग्रेशन टेस्टिंग, टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग आर देयर. वन इज टॉप डाउन एंड सेकेंड इज बॉटम अप. तो टॉप डाउन में हम लोगों ने देखा था कि टॉप मॉड्यूल्स हम लोगों के जो है वो हम लोग रेडी रहते हैं, और बॉटम मॉड्यूल जैसे जैसे रेडी होते जाएंगे उसको हम लोग इंटीग्रेट करते जाएंगे. बॉटम अप में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई बॉटम मॉड्यूल्स जो है उसको हम लोग साथ में क्लब करके देखेंगे कि वो कैसे वर्कआउट हो रहा है ना. और बाद में वो सेम इंटीग्रेशन आपका ऊपर ऊपर जाते जाएगा. क्लस्टर्स बनाएंगे हम लोग छोटे छोटे. और लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इसी का एग्जाम्पल भी देखा था. सो बॉटम अप इंटीग्रेशन, वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस टेस्ट. देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज टेस्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. तो इसके लिए हम लोगों ने अर्ली टेस्टिंग वाला कंसेप्ट जो है वो डिस्कस किया था. वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज अर्ली टेस्टिंग. अर्ली टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि क्या हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, क्यों टेस्ट कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ दोज टेस्टिंग, है ना. तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो अर्ली टेस्ट में आते हैं. एंड रिमेंबर अर्ली टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो अगर आप अर्ली टेस्टिंग अगर नहीं कर रहे हो तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. तो अर्ली टेस्टिंग प्लेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर टेस्टिंग. सो इसके लिए अर्ली टेस्टिंग जो है वो ज़रूरी होगा. दूसरी बात, हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं. तो टेस्ट केसेस अगेन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आपको देखो यहाँ पे कौन से टेस्टिंग जो है वो याद रखना है. फर्स्ट एक्सेप्टेंस टेस्ट आएगा, यूनिट टेस्ट आएगा. नाउ यूनिट टेस्ट एंड अर्ली टेस्टिंग, ये दो फैक्टर्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर यूनिट टेस्ट एंड अर्ली टेस्ट अगर आपको क्लियर नहीं है देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. ओके, एक बार हम लोग क्विकली विल जस्ट हैव अ लुक एट अल्फा एक्सेप्टेंस टेस्ट जो होता है, जहाँ पे हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं, उसका मतलब क्या होगा और उसमें हम लोग क्या क्या फैक्टर्स पे फोकस करेंगे. ठीक है, और उसके बाद में विल गो टू द यूनिट टेस्ट वाला पार्ट. और उसके बाद में यूनिट टेस्ट के अंदर आप जब टेस्ट करते हैं तो वी राइट डिफरेंट टेस्ट केसेस. तो वो टेस्ट केस कैसे लिखेंगे हम लोग वो देखेंगे. सो विल जस्ट क्विकली हैव ए लुक एट दिस, जस्ट 1 मिनट. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा सिस्टम टेस्टिंग. फॉर टेस्टिंग एक एग्जाम, बड़ी नामचीन कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, गूगल है, जो भी अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो दो तरीके की टेस्टिंग से गुजरता है, अल्फा एंड बीटा. अल्फा टेस्टिंग जो है वो बहुत ही हाईली स्किल्ड टेस्टर परफॉर्म करते हैं ऑन साइट पे, यानी अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में अल्फा टेस्टिंग होगा. ये टेस्टिंग जो है इन हाउस होगा. इसमें टेस्टिंग टीम पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करेगी. ये टेस्टिंग में डेवलपमेंट टीम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा. एप्लीकेशन को बीटा टेस्टिंग में रिलीज होने से पहले ही जो भी टीम है वो अल्फा टेस्टिंग कर लेगी. अल्फा टेस्टिंग का मेन फोकस क्या है कि हम जो है रियल यूजर जो इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन के साथ, वो ही हम अल्फा टेस्टिंग में करें बाय यूजिंग ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेक्निक्स. एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक वेबसाइट है, हम वो वेबसाइट को एक मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं फॉर जनरल पब्लिक. तो उसका जो है अल्फा टेस्टिंग इंटरनल लोग भी करेंगे और बीटा टेस्टिंग तो बाहर के जो भी बंदे हैं वो तो करने ही वाले हैं. ठीक है, तो कोई भी इंटरनल अगर चीज है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज हो रहा है, तो उसका सिर्फ अल्फा टेस्टिंग ही होगा, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए यूज नहीं है. राइट. वैसे ही अल्फा टेस्टिंग जो है इंटरनल लोग करेंगे अपने यूज के लिए, और ये देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रहा है, क्या वो यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना यूजर फ्रेंडली है, और परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है.
अब अल्फा टेस्टिंग क्यों होती है? अल्फा टेस्टिंग इसलिए होती है ताकि वो कोई भी स्कोप ना छूटे हमें बग आइडेंटिफाई करने का बीटा टेस्टिंग में। अल्फा टेस्टिंग की जो टीम होती है उसमें बहुत ही हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल टेस्टर चाहिए होते हैं जो ये इंश्योर कर सके कि प्रोडक्ट कंप्लीट है और प्रोडक्ट को बीटा टेस्टिंग में जाना चाहिए अब नेक्स्ट फेज में। अल्फा टेस्टिंग से और क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे बिहेव करेगा, वो रिलायबल है या नहीं है। रियल टाइम यूजर बिहेवियर अब हम जब करेंगे तो वो एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करेगा। कोई भी शो स्टॉपर या सीरियस इश्यूज है तो हमें अल्फा टेस्टिंग में मिल जाएंगे कि भाई ये शो स्टॉपर इश्यू है, इसके कारण एप्लीकेशन क्रैश हो रही है। दूसरा ये बताएंगे हम लोग अल्फा टेस्टिंग में जो भी एरर हम डिटेक्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन और फंक्शनलिटी, ताकि वो चेंज हो सके। अगर कहीं डिजाइन में इश्यू है, राइट, मान लो बटन की डिजाइन है वो ठीक से नहीं की गई है तो उसके कारण जो यूजर को दिक्कत पड़ रही है क्लिक करने के लिए, वैसे छोटे छोटे जो एरर्स है जो बहुत ही हाईली इफेक्ट करते हैं एप्लीकेशन को, वो सारे हम लोग अल्फा टेस्टिंग में फाइंड करेंगे। हमने पढ़ा अल्फा टेस्टिंग के बारे में, हमने एग्जांपल्स देखा अल्फा टेस्टिंग के, और हमने ये भी देखा कि अल्फा टेस्टिंग क्यों जरूरी है। Okay, so that's something very important with respect to जो हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्ट करते हैं, और वो आपको याद रखना है कि अल्फा बीटा टेस्ट तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट एक जो हम लोगों का पार्ट है इसमें विल बी हैविंग अ लुक एट टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से एक होता है जहाँ पे हम लोग टेस्ट केसेस कैसे लिखेंगे, ठीक है, इन सिलेनियम, बिकॉज राइटिंग अ टेस्ट केस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके टेस्ट केसेस जितने प्रॉपर रहेंगे उतना आपका टेस्टिंग सक्सेसफुल होगा। और टेस्ट केसेस अगर हम लोग लिखना सीखेंगे देन वी कैन ईजिली राइट द सेम टेस्ट केसेस फॉर आर सॉफ्टवेयर इज वेल जो आप टी में बना रहे हैं। और अगर आपने वो टेस्ट केसेस और ये बेसिक चीज़ें अगर बता दी है ना, दिस आर फ्यू स्मॉल पॉइंट्स और थिंग्स जो अगर आप अपने प्रोजेक्ट में करते हैं तो उसका सक्सेस फैक्टर बढ़ जाता है, प्लस एक्सटर्नल के सामने आपका प्रोजेक्ट का जो एक इमेज है वो चेंज हो जाता है। So writing a test case is not that difficult. Start using Selenium because most of you are already working on one or the other application which is web based. No one is working on an application which is desktop based. I hope everyone are working on that only. किसी का desktop based नहीं होगा, as much as I assume. So Selenium is very important if your application is web based. सो जो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आप बहुत इजीली वो सिलेनियम डाउनलोड करो, वर्क विथ इट, और जो हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख रहे हैं आप सेम ट्राई टू अप्लाई इट ऑन योर एप्लीकेशन एज वेल। that will help you immensely, not just for your final project, as well as while we enter an industry, that time also this will help you a lot। आपको बेसिक कुछ पता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन टूडेज टाइम द बेनिफिट विच वी हैव कि everyone is just giving exams online, so most of students are not at all interested in studying anything। तो ये टाइम में अगर कोई कंपनी इंटरव्यू लेता है और आपको अगर जो हम लोगों ने कंसेप्ट्स पढ़े, इफ दोज कंसेप्ट्स आर क्लियर विथ यू, एटलीस्ट इफ यू जस्ट गो एंड रिविजिट माई लेक्चर्स तो भी आपके वो कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो इफ दोज कंसेप्ट्स आर क्लियर देन कंपनीज आर हैप्पी टू हायर यू, because when students are not at all studying anything, just वो गूगल करके जहाँ पे आंसर्स दे रहे हैं और वहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट का नॉलेज होना आपके लिए एक एडवांटेज हो गया, एडेड एडवांटेज। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि इन टूडेज टाइम कंपनीज आर फाइंडिंग दोज पीपल जिनको एटलीस्ट अपने एकेडमिक में जो पढ़ा हुआ है उसका नॉलेज हो और वो उन्होंने कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक बार तो अप्लाई किया हुआ हो। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, रिमेंबर, मार्क माई वर्ड्स, आज के टाइम पे जो भी पास आउट होंगे ना उसमें से 100 आउट ऑफ ओनली 10 to 20 पीपल दे आर क्लियर विद देयर कंसेप्ट्स जो हम लोगों ने पढ़ा है। बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, आप एक बार एक साइड फोन रखोगे और छोड़ दोगे, आप में से भी बहुत सारे, आई नो, बट इट डजेंट मैटर फॉर मी फॉर नाउ बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। इफ 5 पीपल्स आर लिसनिंग टू मी, मैं उनको 5 लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, और बाकी जो साइड में रखे हैं वो उनको बोल के मतलब नहीं, वो सुन भी नहीं रहे व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। सो जो सुन रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है।
कि अभी आज के टाइम पे आपके पास जो कंपटीशन जो है ना वो बहुत कम है. ये समझ लो कि यू कैन यूज दिस पैंडेमिक एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर ग्रोथ टू गेट इन द बेस्ट MNC. Why? Because अगर 100 लोग अगर इंटरव्यू में है ना तो उसमें से 60 people who kept their phone aside during lectures, who have just attempted exam just by googling the things, तो आपको कहीं पे भी वो कंसेप्ट जो वो रियल पूछेंगे ना वो इंटरव्यू में नहीं आना है. प्रैक्टिकली आपको नहीं पता है क्योंकि आपने सिर्फ सर्च करके आंसर दे दिया. एग्जाम में एटलीस्ट हम लोग कुछ पढ़ते हैं और लिखते हैं ना तो इंटरव्यू में हम लोग को वो तो याद आ रहा है. लेकिन अभी आपके केस ऐसा है कि वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट लिसनिंग टू द थिंग्स. ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, सो वो जो रिटर्न थिंग्स जो है ना वो कहीं पे आ ही नहीं रहा है. और आप लिख भी रहे हो तो यू आर सिटिंग एट योर ओन कंफर्ट, और वहां पे कहीं ना कहीं कॉपी करने के 10 वेज रहते हैं. तो आप अगर थोड़े से एफर्ट्स डाल के अपने एकेडमिक कंसेप्ट जो है वो अगर क्लियर करते हो ना, यू कैन इजीली गेट इन very excellent MNCs or at least a good MNCs which can easily give you a kickstart to your career. तो बेटा ये समझो मैं जो बोल रहा हूँ, you have only 2 to 3 months left. तो अगर आपको कॉलेज कैंपस सिलेक्शंस अगर नहीं भी हुआ है ना, देन स्टिल यू कैन गेट इन सम MNCs. आज के टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा वंस वी आर डन विद TY, क्योंकि क्वालिटी लोगों का डिमांड ज़्यादा रहेगा. एंड मैं आपको कुछ फैक्टर्स जो बताता हूँ हमेशा, वो मैं वही चाहता हूँ कि इफ़ देर आर सम स्टूडेंट्स जो अगर मैंने पढ़ा के भेजा है तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ा जो आपको इंटरव्यू में पूछ रहा है. थियरी में छोड़ो, थियरी में क्या आएगा वी ऑल नो, या MCQ फाइनल एग्जाम में क्या आएगा फॉर नाउ वी ऑल नो क्या आएगा. आई कैन गिव यू दैट, बट वो देने का मतलब नहीं है. फाइनली इंटरव्यू में आप जब अगर इंडस्ट्री में जाते हो तो वहां पे क्या काम में आएगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू हियर. सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद समथिंग. उसके उसमें अगर आप इफ यू रिस्पॉन्ड मी इन पॉजिटिव वे तो मैं आपको और कुछ बेटर वे में बता पाऊंगा. सो कुछ चीज़ें जो मैंने रेडीली कहीं से सीखे हैं, मैं आपको ये वही सेम चीज़ें कुछ बता रहा हूँ. मैं अलग से वापस वही सेम आपको इंटरप्रेट करूंगा. इट्स बेटर कि हम लोग वही सेम फॉलो करें और उसके बाद में आपको कुछ डाउट हो तो मैंने जो अपना नॉलेज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है वो मैं आपको बता सकूं. ठीक है, और वही हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. एंड वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी, रिमेंबर वी हैव टाइम नाउ फॉर SQA. वी लेफ्ट विथ वेरी लेस सिलेबस. तो वो सिलेबस में थोड़ा थोड़ा पढ़ाने के साथ में आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प करेगा. तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये इसको जितना बेस्ट वे में आप यूज़ कर सको यूज़ कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा. ठीक है, लाइफ में एक ही बार अपॉर्चुनिटी आता है, यूज इट वाइजली, टेक अ डिसीजन. थोड़े कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्लियर करो एंड वो सेम प्रोजेक्ट में अप्लाई करो. और ये दो चीज़ लेके अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो ना, देन वहाँ पे आपको इंटरव्यू में वो सिलेक्ट ना करे इसके इसके चांसेस ही नहीं बचते. ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए. अगर आपने वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट में भी अप्लाई किया है, मतलब उनको जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा आपको आता है. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वापस ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. एनी डाउट लेट मी नो. Okay, so we'll take a small break, then we'll continue in next lecture.